Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Before discussing polar form of Cauchy-Riemann equations, before discussing this topic, first we discuss some important things from the previous lecture. In previous lecture, we discussed the analytic functions. And you know, analytic function, a function is said to be analytic if Cauchy-Riemann equation satisfied. Remember this thing. As in previous lecture, we discuss analytic function, and you know that, and I say that function which is written as u plus iota v form and whose partial derivative always exists and continuous in your level. And now if you want to prove that function is analytic, then just satisfy the Cauchy-Riemann equations, and these Cauchy-Riemann equations also called CR equations. Cauchy-Riemann equations in Cartesian form, whenever Cartesian form and function is given in xy form, means function is given u plus iota v, and where u is function of xy and v is the function of xy also. So means Cauchy-Riemann equations in Cartesian form as partial u or partial x is equal to partial v over partial y, partial u or partial y is equal to minus partial v over partial x. These are the Cauchy-Riemann equations in Cartesian form. When the function is given in Cartesian form, then you can prove that if the function is analytic if the Cauchy-Riemann equation satisfied in your level, right? And because in your level all the first order partial derivatives continuous and exist, right? आपके लेवल पे ये सारे continuous भी होंगे, differentiable भी होंगे, ये भी उसकी condition है. Just satisfying these two equations and prove that function is analytic, right? And now the question is, if the function is given in polar form, means in r theta form, then how can you prove that function is analytic? So must derive these Cauchy-Riemann equations in polar form. First derive these Cauchy-Riemann equations in polar form and then use those polar form equations to prove the function is analytic or not, right? Here the function is given as, suppose not xy form, is form of r and theta, means function is given in polar form, and Cauchy-Riemann equations in polar form is equal to this one. That's very important. Remember Cartesian form and also remember the polar form. Partial u or partial r always equal to 1 over r, partial v over partial theta, and partial v over partial r is equal to minus 1 over r, partial u over partial theta. आप कहेंगे कार्टियन में तो आप पहले partial u over और partial x और फिर partial u over partial, मैंने इधर v इसलिए ले लिया कि मैं दोनों को एक ही फॉर्म में कर लूँ, ये इसी तरह प्रूव होते हैं. आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं partial u over partial theta is equal to minus r partial v over partial r. इसे याद करना ज़्यादा मुश्किल होगा. पोलर फॉर्म को अगर आपने सिर्फ, क्योंकि नहीं सब याद करना, इनका प्रूफ मैंने दिया हुआ है, आपने जस्ट रीड करना है, उसे प्रूफ को करना नहीं है. partial u over partial r is equal to 1 over r, partial v over partial theta, and partial v over partial r is equal to minus 1 over r, partial u over partial theta. These are the Cauchy-Riemann equations in polar form, and proof of these equations is given in your notes, right? Now the polar form of Cauchy-Riemann equations as theorem is given, and here in this theorem we derive the Cauchy-Riemann equation in polar form as here, and this is the derivation of the Cauchy-Riemann equations in polar form. After that, here after these steps you can derive the Cauchy-Riemann equations in polar form. Proof is not required here, right? Remember it, proof is not required, and after this derivation you get the Cauchy-Riemann equations in polar form. Just remember पोलर फॉर्म इक्वेंस, सिर्फ आपने पोलर फॉर्म इक्वेंस याद रखनी है. अब आपका जो टारगेट है वो Cauchy-Riemann इक्वेशन इन कार्टियन फॉर्म एंड Cauchy-Riemann इक्वेशन इन पोलर फॉर्म. इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत जगह पे यूज़ होंगी. नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन, प्रूव दैट फंक्शन इज गिवन एज. This function is given in polar form, and the question is prove that this is analytic by using CR equations. Means first derivative जो है, first partial derivatives जिसके जो होंगे वो exist करेंगे, continuous होंगे, ये already आपके कोर्स में दिया हुआ करेगा. आपने just use Cauchy-Riemann equations and prove that function is analytic or not. Function is given as f of z is equal to r raised to power 1 by 2 cos of theta by 2 plus iota sin theta by 2, and you can write this f of z is equal to u plus iota v, and here multiply r raised to power 1 by 2 inside, then you get this one.
Comparing real and imaginary parts, then u is equal to r raised to power 1 by 2 cos of theta by 2. V is equal to r raised to power 1 by 2 sin of theta by 2. Now first find partial u over partial r, then partial u over partial theta. Find partial v over partial r and partial v over partial theta. When you want to find partial u over partial r, then theta kept constant. So first power, then 1 minus from power and cos theta by 2 as it is. And then partial u over partial theta, then r will be constant, minus 1 by 2, r raised to power, means r, this one is constant, r raised to power 1 by 2. And when you partial derivative cos theta by 2, that is sin theta by 2 with multiply 1 by 2, and cos derivative is minus sign, so this negative sign here. So similarly find partial v over partial r and partial v over partial theta. यहाँ शायद मैंने किसी और मेथड से इसको किया, लेकिन मैं कभी ईजिएस्ट वे बताती हूँ. You can also write partial u over partial r is equal to u subscript r and u subscript theta. V subscript r, V subscript theta is this subscript means partial v over partial थीटा. इसको मैंने खुद किया है कि इसको इसके आगे आपने कैसे प्रूव करना है, ईजिएस्ट वे में आपको बताती हूँ. ये देखें, आपने ये पार्शियल यू और पार्शियल आर ये निकाल लिया, पार्शियल वी और पार्शियल आर ये निकाल लिया, यू थीटा ये है और वी थीटा ये है, राइट. अब आपको मालूम है कि आपके पास जो काशी रीमान इक्वेंस पोलर फॉर्म है वो पार्शियल यू और पार्शियल आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर पार्शियल वी और पार्शियल थीटा. अब ये साइड ले लें, 1 ओवर आर पार्शियल वी और पार्शियल थीटा लें, इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज. ये देखिए 1 ओवर आर पार्शियल वी पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर आर पार्शियल वी ओवर पार्शियल थीटा इज गिवन एज हियर. ये पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये आ जाता है, दिस इज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल आर, जो कि आप ऊपर ये कर चुके हैं फर्स्ट लाइन में. तो मीन्स आपकी एक कंडीशन प्रूव होगी. दूसरे कंडीशन के लिए देखें, पार्शियल वी और पार्शियल आर इज इक्वल टू -1 ओवर आर पार्शियल यू और पार्शियल थीटा. तो मैं ये साइड लेती हूँ, ये साइड मैंने ली, -1 ओवर आर पार्शियल यू और पार्शियल थीटा पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, यू गेट फाइनली पार्शियल व्यू और पार्शियल थीटा. हैंस द बोथ इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, हैंस यू कैन से दैट गिवन फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन. जो नोट्स में किया वो भी ठीक है, वो ज़रा लेंथी वे से है, ये ज़रा मैंने शॉर्ट वे मेरे जहन में आया तो मैंने इस तरह से करवा दिया. ठीक है जी. यहाँ एक एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट. We want to prove that function which is given here, a derivative exists for all z and is given by 2z. Is given by 2z, means this function is given, and we want to prove that its derivative exists, and the answer is 2z. F of z is equal to z square. You can write x plus iota y whole square, which is equal to this one, right? After that, comparing real and imaginary part, you know that f of z is equal to u plus iota v, then u is equal to x square minus y square, v is equal to 2xy, and partial u over partial x is this one, partial u over partial y is this one, partial v over partial x, and this is partial v over partial y. You know that partial u over partial x is equal to partial v over partial y, equal, and partial u over partial y is equal to minus this one, hence equal. Both C are equations in Cartesian form, true, and this is already 4 partial derivatives exist and continuous and satisfying C are equations, so the given function is analytic. ये हमने प्रूव कर दिया एनालिटिक है, इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये मैंने आपको पीछे एक जगह पे बताया था कि अगर किसी भी कोई भी फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन ऑलवेज इक्वल टू पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एओटा पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई होगा. जो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स निकाला है वो लिखते हैं, एओटा पार्शियल वी और पार्शियल वाई लिखते हैं, 2 कॉमन ले लें तो दैट इज 2z. आंसर आपके पास आ गया. ठीक है. अब ये जो एग्जाम्पल है आगे बी एग्जाम्पल, ये आपने खुद करनी है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, यहाँ सारी सॉल्व है. आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बाद में पूछ लेंगे. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू दिस वन हैज़ नो डेरिवेटिव एनीवेयर, के कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं है, कोई कंडीशन लगा के भी नहीं निकाल सकते एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, क्योंकि जो एग्जाम्पल पहले मैंने छोड़ी है ना आपके लिए, उसमें आप कंडीशन लगा के कर सकते हैं, वो खुद देखेंगे. एफ ऑफ जी इज इक्वल टू दिस वन एंड कोस वाई माइनस योटा साइन वाई. दिस इज नॉट पोलर फॉर्म, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, बिकॉज हियर एंगल इज इन फॉर्म ऑफ वाई, रिमेंबर इट वन. u is equal to cos of y, v is equal to minus sin of y, partial u or partial x 0, partial u or partial y this one, partial v or partial x 0, partial v or partial y is this one. So this value is not equal to this one, and this is not equal to this for any condition. किसी भी कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगी, सो डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट हियर. इसे आप देख लीजिए. ठीक है. आफ्टर दैट वी डिस्कस हार्मोनिक फंक्शन. रिमेंबर दैट अ रियल वैल्यूड फंक्शन,
और रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों कहा है? क्योंकि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी और वो यू प्लस योटा वी है, तो उसमें यू और वी जो हैं दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो ये बात यू और वी के लिए कर रहे हैं, एफ ऑफ जी के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि एफ ऑफ जी एक कम्प्लेक्स फंक्शन है। और रियल वैल्यूड फंक्शन जो कि यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, कोई और भी। Our real valued function of x and y is said to be harmonic if harmonic in a domain or full domain it has continuous partial derivative exist of any order, first and second order, and satisfying the partial differential equation. Here he said that any real valued function whose first order or first and second order partial derivative exist, a real valued function of two real variables x and y is said to be harmonic in a given domain of the xy plane or throughout the domain if it has continuous partial derivative of the first and second order exist एंड सेटिस्फाइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन जो है उसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, तो वो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाली इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करे तो आप कहेंगे कि वो फंक्शन हार्मोनिक है। और इस इक्वेशन का एक ख़ास नाम है लैप्लास इक्वेशन। रिमेंबर दिस वन। ये इसमें क्या कह रहा है? वो हार्मोनिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन से एच, यू और वी आर ऑफ एनी वेरिएबल एक्स एंड वाई सेट टू बी continuous in a domain if its continuous partial derivative of first and second order exists and satisfy this one, and this equation is called Laplace equation। ठीक है, इसका जो थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करती हूँ, और ये थ्योरम आएगा, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि ये थ्योरम जो है ये आपने करना है, इसका प्रूफ भी करना है। इसका प्रूफ आपके कोर्स में है, ये आपकी बुक में था, इसलिए मैं करवा रही हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे।